Hello everyone, it's my pleasure to extend a hearty welcome to our channel Vidyarthi Pro Learning Platform. I am Shweta Malti and I'm here to improve your knowledge bank with our question bank. और आज के सेशन में हम बिजनेस स्टडीज सीरीज का थर्ड यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट कवर करेंगे एंड ऑल दीज स्पेशली हैंड पिक्ड क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स लाइक CUET, Intermediate, BCom, BBA, NET JRF, UPHESC, UPPSC, UPSC and many other entrance examination papers. Okay, so let's move to our very important memory recall questions, and our first question is business environment includes what? Option number 1, customer and employees. Option number 2, surroundings of business. Option number 3, forces, factors, institutions which directly or indirectly affect business. And option number 4, none of the above. And the correct and most relevant answer for this question is option number C, forces, factors, institutions which directly or indirectly affect करता है business को. बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स करता है वैसे तो सभी को, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस एट्सेट्रा, बट जो मेनली होता है वो फोर्सेस और फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट बिजनेस, वो ही बस बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा. Because the business environment is the combination of internal and external factors that influence the company's operation, strategies, decision making. It includes economic conditions, technological advancement, legal and regulatory environment, social and cultural factors, demographic factors, etc. Our next question is, the study of business environment helps a business to what? Option number 1, identify opportunities and threats. Option number 2, adapt to changes in the environment. Option number 3, formulate the strategies. और option number 4, all of the above. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिजनेस को किस तरीके से हेल्प करता है, क्वेश्चन में ये पूछा है. और ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि वो आइडेंटिफाई करता है जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या जो थ्रेट्स होती हैं. ऑप्शन नंबर 2 कहना है कि अडेप्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में वो बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है. ऑप्शन नंबर 3 होता है फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज़, जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनका फॉर्मुलेशन के लिए. Therefore, option number D, all of the above is the correct answer because ये सभी helpful होते हैं business के लिए. As we can see in the explanation part, study the business environment helps a business to make informed decision, stay competitive and achieve long-term success. Our next question is, the business environment is what in nature? Business environment का नेचर कैसा है? डायनेमिक नेचर है, स्टेबल नेचर है, कांस्टेंट रहता है या नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डायनामिक इन नेचर. क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डायनामिक इन नेचर होता है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है एज पर द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स, एज पर द चेंजेस इन बिजनेस पॉलिसीज, एज पर द चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. ये बहुत ही changing nature का होता है. That's why option number 1, dynamic is the correct answer, and due to various internal and external factors as well that affects the business. हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1, इट अफेक्ट्स वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस. ऑप्शन नंबर 2, बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलवेज चेंजेस, या हमेशा चेंज होता रहता है. ऑप्शन नंबर 3, इट अफेक्ट्स ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. एंड ऑप्शन नंबर 4, अ बिजनेस हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर बिजनेस एनवायरनमेंट. इन दिस क्वेश्चन वी हैव बी वेरी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू नहीं पूछा है. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, a business has complete control over business environment. The business environment is made up of various internal और external factors से बनता है business environment, जो कि beyond the control of any individual business owner, किसी भी एक individual business owner के control में नहीं रहता है. एक businessman, एक individual businessman बहुत सारे steps ले सकता है to influence and adopt the business environment, but वो completely control नहीं कर सकता है business environment को. Therefore, option number D is the incorrect option for the business in the aspect of business environment. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस में क्या डिफरेंस है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1,
The internal environment is controllable by the business but not the external environment. Internal environment controllable होता है business से but external environment नहीं होता है. Option number 2 ये कहता है कि the external environment is controllable by the business but the internal environment is not controllable by the business organization. And option number 3, the internal environment influences the business but not the external environment. मतलब सिर्फ internal environment ही influence करता है business को. और option number D, none of the above. Option number 4 is the none of the above, and the correct answer is option number 1. The internal environment is controllable by the business but external environment is uncontrollable by the business. इंटरनल एनवायरनमेंट को तो फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो मैनेज नहीं कर सकता है. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक मैनेज कर सकता है बट फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकता. द इंटरनल एनवायरनमेंट कैन बी मैनेज्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय द कंपनी टू द सम एक्सटेंट, सच एज थ्रू हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करके, चेंज इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में चेंजेस करके, विच इंटरनल एनवायरनमेंट को तो कंट्रोल कर सकते हैं. बट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं वो लार्जली शेप्ड होते हैं बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, जो कि बियॉन्ड द कंपनीज कंट्रोल होते हैं. Our next question is, which of the following is not a factor of the internal environment? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट का फैक्टर नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 प्रोडक्शन मेथड, ऑप्शन नंबर 2 पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंड ऑप्शन नंबर 4 मार्केटिंग इंटरमीडियरीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंटरनल ही एक्सटर्नल फैक्टर है. बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स ऊपर के 3 ऑप्शंस में दिए गए हैं वो सारे इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हैं. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट करता है बिजनेस एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट को. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हेल्प टू प्रमोट, sell and distribute a business products or services to customers. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम फैक्ट्री टू कंज्यूमर जो पहुंचता है, जो मीडिएटर्स होते हैं उन्हें मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कहते हैं, जैसे एजेंट्स, ब्रोकर्स, होलसेलर्स, रीसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सारे फिजिकल और ऑनलाइन रिटेलर्स ये मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कहलाते हैं. Our next question is, micro environment is also called as which type of environment? माइक्रो environment को हम और किस environment के नाम से भी जानते हैं? And the options are option number 1 general environment, option number 2 operating environment, option number 3 economics environment and option number 4 political environment. And the correct answer for this question is option number 2 ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट को हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं क्योंकि जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है वो और भी कई तरह के फैक्टर्स शामिल करता है, जैसे स्टेक होल्डर्स दैट आर क्लोजेस्ट टू द बिजनेस एंड हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इट्स ऑपरेशन एंड सक्सेस. देयरफॉर माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से. एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर नोन टू बी व्हाट? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 फैक्टर्स ऑफ द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 2 फैक्टर्स ऑफ internal environment and option number 3 factors of macro environment and option number 4 none of the above. And the correct answer for this question is option number C, factors of macro environment. And the correct answer for this question is option number C, factors of macro environment. बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को हम मैक्रो फैक्टर्स भी कह सकते हैं क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट एक टिपिकली डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, मैक्रो और माइक्रो. तो माइक्रो में ऑपरेशंस आ जाता है और बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डायमेंशंस होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट आ जाते हैं. अब जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो होते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, नेशनल इनकम, जो होल कंट्री का होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं. एंड एट द सेम टाइम जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड सप्लायर्स, लेवल ऑफ कंपटीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Our next question is, which of the following is included in the dimensions of the business environment? Options are option number 1 technological environment, option number 2 social and cultural environment, option number 3 political environment and option number 4 all of the above. According to the question, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन से फॉलोइंग डायमेंशंस हैं, कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस हैं जो कि डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड किए जाएंगे. एंड द ऑप्शंस आर
4 ऑफ द अब, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है वो इंक्लूड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो कि कंट्रोल में नहीं होते ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, such as economic, technological, political, socio-cultural and natural environment dimensions. Our next question is, the economic environment includes factors such as what? Option number 1 inflation, option number 2 interest rate, option number 3 gross domestic product and option number 4 all of the above. According to the question ये 4 options दिए गए हैं और इनमें से कौन सा factor economic environment में include होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही ऑप्शंस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द इकोनॉमी एंड कैन अफेक्ट द ऑपरेशंस एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। जो फैक्टर्स इम्पैक्ट पड़ता है जिनका इकोनॉमी पर, उन्हें और जो अफेक्ट करता है ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस और सक्सेस ऑफ द बिजनेस, ये सारे ही फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। ये it includes inflation rate, interest rate, exchange rate, economic growth and government policies. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स से ही रिलेटेड है एंड आवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस। ऐसा कौन सा इंटरनल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस पे? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 कॉम्पिटिटर, ऑप्शन नंबर 2 मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 3 सप्लायर्स एंड ऑप्शन नंबर 4 गवर्नमेंट रेगुलेशंस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा इंटरनल फैक्टर है जिसका इफेक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस पे। इंटरनल फैक्टर्स आर फैक्टर्स दैट ओरिजिनेट विद इन अ बिजनेस एंड कैन इम्पैक्ट इट्स ऑपरेशन एंड सक्सेस. It includes management, organizational structure, human resources, etc. Internal factors of the business environment एक ऐसे factors होते हैं जो originate करते हैं within a business and can impact its operation, जिनका impact पड़ता है operation and success of the business. ये management, organizational structure, human resources इन सभी को भी include करते हैं. And our next question is, which of the following is not an external factor that affect the functioning of a business? And the options are option number 1 customers, option number 2 employees, option number 3 government regulations and option number 4 natural disasters. And the correct answer for this question is option number 2 employees. Employees एक ऐसा पार्ट ऑफ इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल एनवायरनमेंट का ये ऐसा फैक्टर है जिसके हेल्प से सारे ही मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस सभी पे इम्पैक्ट पड़ता है और सभी रिलेटेबल होते हैं स्पेशली एम्प्लॉयज़ से. Our next question is, which of the following is a social cultural factors that affects the functioning of a business? And the options are option number 1 interest rate, option number 2 inflation, option number 3 demographics, option number 4 GDP. And the correct answer for this question is option number C demographics. क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सोशल और कल्चरल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. एंड द ऑप्शन नंबर सी डेमोग्राफिक्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Because social and cultural factors refers to the values, beliefs, attitudes and behaviors of the society or community that can impact the operations and success of business. It includes factors such as demographic factors, lifestyle, trends, social norms, cultural values, etc. Demographic factors में mainly include करता है age, race, ethnicity, gender, marital status, income, location of the business, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा. तो डेमोग्राफिक फैक्टर ही सोशल और कल्चरल फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं और ये इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो जाएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस. Our next question is, political environment includes factors such as what? Options are option number 1 trade policies, option number 2 taxation policies and option number 3 government stability and option number 4 all of the above. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से किन फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि ट्रेड पॉलिसीज़, टैक्सेशन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी या फिर सभी से. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री होता है उसी के वजह से गवर्नमेंट बनती है और फिर वही गवर्नमेंट अपनी अपनी पॉलिसीज़ लेके आती हैं और वो अपनी पॉलिसीज़ का अप्रूवल करते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और उससे इन सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है. ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं
जैसे कि ट्रेड पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं विद द चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, विद द चेंज विद द टैक्सेशन पॉलिसीज़। नई नई गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो अपने अपने गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट टैक्स, न्यू टैक्सेशन पॉलिसीज़ लॉन्च करती हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का इन सब पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। The political environment refers to the impact of political institutions, government policies, political movements on the business. By monitoring and analyzing the political environment, businesses can anticipate changes in regulations, taxes, and trade policies and adjust their strategies accordingly. And our next question is, which of the following is a technological factor that affects the functioning of business? ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है इन चारों ऑप्शंस में जो कि बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग पे अफेक्ट करता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 कंपटीशन, option number 2 government regulations, and option number 3 innovation, and option number 4 natural disasters. And the correct answer for this question is option number 3 innovation. इनोवेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इनोवेशन का बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। जैसे कि नोकिया ने जो भी इनोवेशंस आए, उन्हें जो अपडेट्स आए, उन्हें ना वो फॉलो किया उसने, ना अडॉप्ट किया। सो Nokia is out of the market, and the emergence of new technologies can create opportunities for business to improve their operations and develop new products and services. इसे हम इनोवेशन कहते हैं। जैसे कि अभी रीसेंट इनोवेशंस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है कि सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी एट्सेट्रा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 नेचुरल डिजास्टर, ऑप्शन नंबर 2 इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन नंबर 3 सोशल नॉर्म्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 इंटरेस्ट रेट, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट ही ऐसा है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही फैक्टर है। अब नेचुरल डिजास्टर तो नेचुरल फैक्टर हो गया या क्लाइमेटिक फैक्टर कह सकते हैं, सोशल नॉर्म्स हो गया सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज फ्रॉम पॉलिटिकल फैक्टर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इंटरेस्ट रेट इज द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है फैक्टर्स को सच एज इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट इम्पैक्ट द इकोनॉमी. These factors can impact a business operations, sales and profitability. Our next question is, all the positive changes occurring in a business environment which lead to improvement in the performance of an organization is known as what? Options are option number 1 efficiency, option number 2 threats, option number 3 opportunity, option number 4 object. And the correct answer for this question is option number 3, option number C, opportunity. In this slide, the basic definition, the basic meaning of opportunity is given by this statement कि सारे ही positive changes occurring in the business environment जो कि लीड करते हैं इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, उसे हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं. बिजनेस इनेबल और अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटेट्स और एनहांसेस द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चेंजेस इन रेगुलेशन, शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लाइक. Our next question is, high inflation rate is a problem for the business belongs to which of the following environment? High inflation rate ये एक ऐसा प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है. बिजनेस ये किस इन्वायरमेंट को बिलोंग करता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की वजह से होता है, या ऑप्शन नंबर 2 सोशल इन्वायरमेंट की वजह से होता है, या ऑप्शन नंबर 3 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एंड ऑप्शन नंबर 4 पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. And the correct answer for this question is option number C, economic environment. Economic environment की वजह से high inflation rate ये economic environment का factor है. Economic environment include करता है जैसे कि inflation rate, exchange policies, economic growth, etc. Our next question is, the RBI reduces CRR. CRR means cash reserve ratio by 0.5% to control recession. This is related to which dimension of business environment? RBI reduce करता है अपना कैश रिजर्व रेशियो बाय 0.5% टू कंट्रोल रिसेशन. रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए ये दिस इज रिलेटेड टू विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? ये बिजनेस एनवायरनमेंट के किस डायमेंशन से
रिलेट करता है. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 लीगल इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर 2 सोशल इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड ऑप्शन नंबर 4 पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. CRR एक ऐसा परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कि बैंक में रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन द सेंट्रल बैंक एज अ रिजर्व. By reducing the CRR, the RBI injects more money into the banking system, increasing the amount of money available for lending. जो मेन और बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कैश रिजर्व रेशियो का, वो सस्टेन करता है सॉल्वेंसी पोजीशन को और ये इंश्योर करता है लिक्विडिटी सिस्टम को कंसिस्टेंटली मेंटेन करने के लिए इन कॉमर्शियल बैंक. RBI गेट कंट्रोल टू द and coordinate the credit maintained by banks through the CRR rate, which helps to have a smooth supply of cash and credit in the economy. Therefore, cash reserve ratio का ये reducement या control जो होता है by RBI, this is an economic factor and this is related with the economic environment. And our next question is, which one of the following option is correct for the process of analyzing the environment for the identification of factors which have impact on or have implication for the business? And the options are option number 1 assessment, option number 2 forecasting, या option number 3 scanning और option number 4 none of these. इन सारे ऑप्शंस में ऐसा कौन सा टर्म है जो कि डिनोट करता है प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स विच जिनका इम्पैक्ट पड़ता है और जिनका इम्प्लीकेशन होता है बिजनेस में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्कैनिंग. Scanning the business environment is a crucial activity for organization to remain competitive and responsive to changes in the external environment. Our next question is, PEST is an acronym which stands for what? Options are option number 1 political, environment, social, societal, technology. And option number 2 political, economic, societal, technological. Option number 3 political, economic, social and technological. And the option number 4 people, economy, standards and transport. And the correct answer for this question is option number C political, economic, social and technological. पेस्ट एनालिसिस एक ऐसा स्ट्रैटेजिक टूल है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस. पेस्ट is an acronym that stands for political, economic, social and technological factors. And our next question is, when were the economic reforms in India initiated? इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब स्टार्ट हुए? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 1975, ऑप्शन नंबर 2 1980, ऑप्शन नंबर 3 1985 एंड ऑप्शन नंबर 4 1991. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 1991. 1991 में इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था. द कंट्री वॉज फेसिंग द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस. तब कंट्री 1947 में जस्ट वो फ्री हुआ था अपने डिपेंडेंसी से. और एंड अबाउट टू 1991 इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस थी विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन एंड लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. टू एड्रेस ऑल दीज चैलेंजेस, इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ द फिनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह. And our next question is, who is known as the architect of India's economic reform? Indian economic reform का architect किसे कहा जाता है? And the options are option number 1 नरसिम्हा रॉय, option number 2 डॉक्टर मनमोहन सिंह, option number 3 अटल बिहारी वाजपेयी जी और option number 4 राजीव गांधी जी. And the correct answer for this question is option number 2 डॉक्टर मनमोहन सिंह. डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक कहे जाते हैं जो कि जिन्होंने सर्व किया था और ये उस टाइम पे फिनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के फ्रॉम 1991 टू 1996 एंड ही वाज द ओनली पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी. And our next question is, which of the following are not the economic reforms introduced in 1991? इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में ऐसा कौन सा ऑप्शन था जो कि नहीं था? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3 नेशनलाइजेशन और ऑप्शन नंबर 4 लिबरलाइजेशन.
एक्चुअली जो बेसिक रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो ही एलपीजी था. देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी नेशनलाइजेशन इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Therefore, it is eliminated. The economic reforms included liberalization, privatization, and globalization. Measures that aimed to open up the Indian economy, reduce government regulations, and attract foreign investment. Our next question is integrating the economy with the economies of the rest of the world is known as what? And the options are option number 1 globalization, option number 2 privatization, option number 3 nationalization और option number 4 liberalization. मतलब इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी, जो कंट्री की इकोनॉमी है, डोमेस्टिक कंट्री की इकोनॉमी है, उसको सारी कंट्री के इकोनॉमी से जोड़ने को, इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर 4 ऑप्शंस: ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंसेस among various countries, business and people across the world. ग्लोबलाइजेशन ही एक ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी था जिसके थ्रू हम पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर सकते थे. देयरफॉर ग्लोबलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Our next question is relaxation or removal of strict rules and regulations is a part of what? Options are option number 1 globalization, option number 2 privatization, option number 3 nationalization और option number 4 liberalization. कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसमें रिलैक्सेशन और रिमूवल ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस हुए थे? And the correct answer is option number D, liberalization. Liberalization refers to the process of loosening or removing government restrictions on economic activity with the aim of increasing competition, encouraging innovation and promoting economic growth. लिबरलाइजेशन में बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के चेंजेस आए जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट ने सबको ये परमिशन दी, सबको ये स्ट्रिक्ट रूल्स हटाए कि हाँ आप अलग अलग वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जो प्राइवेट सेक्टर है या इंडिविजुअल ओनर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट देयर economic values as the contribution in the GDP. Our next question is opening doors for private sector in the area reserved for public sector is known as what? Options are option number 1 globalization, option number 2 privatization, option number 3 nationalization and option number 4 liberalization. कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हम ओपनिंग डोर्स फॉर प्राइवेट सेक्टर के नाम से जानते हैं इन द एरिया रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, जो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए रिजर्व थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन. जैसे कि आज भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का ही कंट्रोल है, बट अब कुछ सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से दैट कैन ओपन द डोर फॉर प्राइवेट सेक्टर, जो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के थ्रू रिजर्व एरिया था. प्राइवेटाइजेशन रिफर करता है एक ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप and control of public sector enterprises and asset to the private sector. It is often done with the aim of improving efficiency, reducing costs and promoting competition. बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज़ मच मोर एफिशिएंट. अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर उसमें पैसे लगाता है या अगर उसके हाथ में ओनरशिप होती है, सो ही इज़ अकाउंटेबल, the person, the organization is accountable for their own growth and development. So it can be very positive impact for the growth and development of any organization. Our next question is, which committee recommended the liberalization of India's economy in 1991? इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में किस कमिटी ने लिबरलाइजेशन को रिकमेंड किया था? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 is Rangarajan Committee, option number 2 Chakravarti Committee, option number 3 Narasimhan Committee and option number 4 Sivaraman Committee. And the correct answer for this question is option number C, Narasimhan Committee. The committee that recommended the liberalization of India's economy in 1991 is known as the Narasimhan Committee. Narasimhan Committee ने 2 reports submit किए थे on the banking sector and the other one on the financial sector, जो कि recommend करते थे several measures जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते थे फॉर द लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्टर वाज द फोकस
ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि 1991 में स्टार्ट हुआ था, उसमें सबसे पहले किस सेक्टर को फोकस किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। And the correct answer for this question is option number 2, industry sector. फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि इंडिया में स्टार्ट हुआ था इन 1991, उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया था। उस टाइम पे इंडिया बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वाज फोर्स्ड टू सीक असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी। And our next question is, which sector was liberalized in the second phase of economic reforms in India? Second phase of economic reforms in India में कौन सा सेक्टर को फोकस किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर तो बहुत ही अच्छा था, ऑप्शन नंबर 2 इंडस्ट्री सेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 बैंकिंग सेक्टर एंड ऑप्शन नंबर 4 सर्विस सेक्टर। इनमें से कौन सा सेक्टर था जो चूज किया गया था फॉर द growth and betterment of economic condition of the India? And the correct answer for this question is option number D, service sector. Second phase of economic reform में जो कि start हुआ था late 1990s में and continue किया गया था early 2000 तक, वहाँ पे focus किया गया था liberalization of service sector. And our next question is, in which of the following policies RBI keep control on the money supply to get the objectives of the general economic policies? इनमें से कौन से options हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं आरबीआई के लिए टू कीप कंट्रोल ऑन द मनी सप्लाई टू गेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड ऑप्शन नंबर 4 ट्रेड पॉलिसीज। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होती हैं आरबीआई के लिए, जो कि दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई. The Reserve Bank of India, RBI is the Reserve Bank of India, uses monetary policies to control the money supply and achieve the objectives of general economic policies. Monetary policy refers to the measures taken by the central bank to regulate the supply of money and credit in the economy. यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अलग अलग हैं. मॉनेटरी पॉलिसीज़ अलग होती हैं और फिजिकल पॉलिसीज़ अलग होती हैं. मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जो इंटरेस्ट में चेंजेस लाती हैं, ये सेंट्रल बैंक के थ्रू सेटअप की जाती हैं. और जो फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं दैट वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पे चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स रेट्स एट्सेट्रा, ये फिजिकल पॉलिसी का कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है. मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन टारगेट होता है. साइड इफेक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी होता है गवर्नमेंट बजट, बोरोइंग एट्सेट्रा. और साइड इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है एक्सचेंज रेट में चेंजेस आएंगे, हाउसिंग मार्केट में चेंजेस आएंगे. जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं वो मोस्टली इंडिपेंडेंट होती हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस से, बिकॉज इनका उस पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है. बट जो फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशंस होती हैं टू चेंजिंग टैक्स रेट्स एट्सेट्रा. Okay, our last but not least question is, the policy related to income and expenditure of government is known as what? Options are option number 1 fiscal policy, option number 2 monetary policies, and option number 3 industrial policies, and option number 4 trade policies. And the correct answer for this question is option number A, fiscal policy. फिजिकल पॉलिसी रिफर करता है यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, बोरोइंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. फिजिकल पॉलिसी इज यूज्ड टू अचीव द वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सच एज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट. देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 फिजिकल पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी ही एक ऐसी पॉलिसी है जो रिलेट करती है इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट से. मॉनेटरी पॉलिसीज तो आरबीआई की पॉलिसीज से, आरबीआई के इफेक्ट्स, आरबीआई की पॉलिसीज से, इनिशिएटिव्स से अफेक्ट करती. इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर नॉट फॉर these two types of income and expenditure types. Trade policies is something very different. Therefore option number 1 fiscal policy is the correct answer for this question. With that आप हमारी बाकी की प्लेलिस्ट भी फॉर अनदर चैप्टर्स, फॉर अनदर मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस को आप ज़रूर से देख सकते हैं. So it's time to wind up our session and we are offering very important information for all of our students. We are offering a test series. For more updates, kindly WhatsApp your details on the number blinking on the screen and join our Telegram channel Vidyarthi Pro Learning for daily updates. Our Vidyarthi Pro Learning family welcomes all your valuable feedback, your queries, your suggestions, your valuable comments in the comment section below.
or feel free to contact on the given WhatsApp numbers. Stay tuned for more updates. Till then, keep revising and keep boosting your knowledge bank with our question bank. Thank you. Goodbye. Take care.